एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स? फ्रेंड्स, यहाँ पर हम आप लोगों के लिए बहुत ही फ्रेश सीरीज लेकर आए हुए हैं बायोलॉजी के। तो आप किसी भी एग्जाम से तैयारी कर रहे हो लाइक टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, DSSSB EMRS, जिसके एग्जाम्स पिछले साल ही हुए थे, उसके भी यहाँ पे आपको PYCQs देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप नीट 2024-25 की आप तैयारी कर रहे हो, नीट एस्पिरेंट्स, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेशन रहने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। और पहला क्वेश्चन देखिए क्या यहाँ पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ सीड प्लांट्स बट नॉट ट्रू ऑफ सीडलेस प्लांट्स? ऑप्शंस है द स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन द गेमेटोफाइट, द स्पोरोफाइट इज लार्ज एंड द गेमेटोफाइट इज स्मॉल एंड इंडिपेंडेंट, द गेमेटोफाइट इज रिड्यूस्ड एंड डिपेंडेंट ऑन द स्पोरोफाइट, द स्पोर इज द मेन मीन्स ऑफ डिस्पर्सिंग ऑफ ऑफस्प्रिंग्स। चलिए आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 66। अभी तक हमने आपको बहुत सारे सेशंस प्रोवाइड करा चुके हैं, आप उन सभी को अटेंड कीजिए, किसी भी क्लास को आप मिस नहीं करेंगे, ठीक है? क्योंकि हर एक क्लास में यहाँ पे क्वेश्चन जो आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है वो हर एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए इसका आंसर देखेंगे क्या हो जाएगा। The gametophyte is reduced and dependent on the sporophyte is our correct answer. Option C. Next question देखते हैं। The diploid generation of the plant life cycle always. Options है produces spores, is called the gametophyte, is larger and more conspicuous than the haploid stage, develops from a spore. आप लोग क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिएगा डेली क्लास के लिए, ठीक है? वहाँ पर आपको बेल आइकन को प्रेस करना है, इससे आपको डेली क्लासेस टाइम पर प्रोवाइड होते रहेंगे। क्वेश्चन देखिए, द डिप्लॉयड जनरेशन ऑफ द प्लांट लाइफ साइकिल ऑलवेज के एंड अ राइट आंसर इज प्रोड्यूसेस स्पोर्स। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। हर एक क्वेश्चन को नोट करते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 number question. The closest seedless relatives of seed plants produce one kind of spore that gives rise to a bisexual gametophyte. What does this suggest about the ancestors of seed plants? Options देखेंगे। They were gymnosperms, they were bryophytes, they were heterosporous, they were homosporous. Question number 68. Okay. And the right answer is they were homosporous. Option D is correct. Option D. Next. Question number 69. Where and when does fertilization occurs in the mushroom life cycle? Options है underground as a mycelium begins to spread, on the surface of the ground when a basidiospore germinates, in a mushroom when the nuclei of a dikaryotic cell fuse, underground when the hyphae of different mating types fuse. बहुत ही फ्रेश क्वेश्चंस यहाँ पे आपको कराए जा रहे हैं, ठीक है? आप क्लास को शेयर कीजिएगा, जो भी आपके फ्रेंड्स फैमिली अगर वो भी यहाँ पे किसी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी क्लासेस बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए देखते हैं राइट आंसर क्या है। वेयर एंड व्हेन डज फर्टिलाइजेशन अकर इन द मशरूम लाइफ साइकिल? तो मशरूम के लाइफ साइकिल में उनका फर्टिलाइजेशन कहाँ पे और कब दिखाई देता है, ये अकर होता है? एंड राइट आंसर इज इन अ मशरूम व्हेन द न्यूक्लियाई ऑफ अ डाइकैरियोटिक सेल फ्यूज। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70. Lichens are important pioneers in areas that have been burned by
fires or destroyed by lava flows because. Options A, they are important in the initial stage of soil formation. They release chemicals that maintain the surface of the underlying substratum. They take up excess nitrogen. They thrive on acid rain. अच्छे से पढ़ेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे एंड देन ही आप आंसर करेंगे. क्वेश्चन नंबर 70 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहां पर आपको बहुत ही सारे क्वेश्चंस आपसे सॉल्व कराए जाएंगे हर एक टॉपिक पे. बस आपका कोऑपरेशन हमको मिलना चाहिए, आप कोऑपरेट कीजिए, हम भी यहाँ पर डेली आपके लिए क्लास लेकर आते रहेंगे. Okay, and the right answer is they are important in this initial stage of soil formation. Option first is correct. Next question number 71. Which characteristic below is shared by plants, fungi and animals? Options say they all have cell walls, all are multicellular eukaryotes, all are held together by structural proteins, all have intracellular junctions known as desmosomes. Question number 71. Very important question. Which characteristic below is shared by plants, fungi and animal? जो तीनों कौन से कैरेक्टर को शेयर करते हैं, मतलब तीनों में कौन सा कैरेक्टर है जो प्रेजेंट होगा? सेल वॉल तीनों में प्रेजेंट नहीं हो सकता, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स भी नहीं, डेस्मोसोम्स भी नहीं. यहाँ पर ओनली वन ऑप्शन इज करेक्ट और ऑप्शन बी, ऑल आर मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स. ऑप्शन बी इज करेक्ट. All are multicellular and eukaryotes. Option B. Next question number 72. Many members of the red alga are adapted to deeper water due to the observation that. Options say their red pigments readily absorb red light. Their cell walls are adapted to withstand bright light. Their photosynthetic pigments efficiently absorb blue and green light. They grow long stalks with floats on the end to hold the blades near the surface. चलिए, सेशन आपको कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके बताएंगे फ्रेंड्स. चलिए, question number 72. Many members of the red alga are adapted to deeper water due to the observation that their photosynthetic pigments efficiently absorb blue and green light. Option C is correct. नोट कर लेंगे या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर क्वेश्चन. द रेड alga are characterized by. Options: alternation of generation in some species, flagellated gametes that do not require water for fertilization to occur, population explosion known as red tides, multinucleated portions. Okay, आंसर करेंगे. क्वेश्चन नंबर 73. The red alga are characterized by alternation of generation in some species. Option first is correct. Next question 74 number question. Which of the following is not a difference between alga and plants? Options है plant cells have rigid cellulose walls and algal cells do not. Plant zygote develops into embryos whereas those of alga do not.
Alga lack the some organs characteristic of plants. Plants have xylem and phloem and alga do not. बहुत ही important question है ये. Which of the following is not a difference between alga and plants? Question number 74. Okay, and the right answer is plant cell have rigid cellulose walls and algal cell do not. Option first is correct. Next, 75 number question. Which of the following is not a homology shared by land plants and their closest living algal relatives? Options देखेंगे. Rosette cellulose synthesizing complexes, many of the details of cell division, the presence of peroxisomes, the presence of cuticle on the surface of leaves. चलिए, अगर आप नीट 2024 एंड 25 की तैयारी कर रहे हैं, नीट के एस्पिरेंट्स, इसके अलावा DSSSB के एस्पिरेंट्स, नेट, JRF, EMRS, TGT, PGT, किसी भी लेवल की आप तैयारी कर रहे होंगे, यहाँ पर आप प्रैक्टिस कीजिए फ्रेंड्स, आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा, आप देखने को मिलेगा आपको. चलिए, क्वेश्चन नंबर 75. The presence of cuticle of the surface of leaves, option D is correct. Next question. The alternation of generations, option C, is unique to plants, is distinguished by unicellular haploid stage and a multicellular diploid generation, consists of a diploid gametophyte stage alternating with a haploid sporophyte stage, is distinguished by haploid and diploid stages that are both multicellular. Alternation of generations. Is distinguished by haploid and diploid stages are both multicellular. Option D is correct. Next, question number 77. Plants undergo alternation of generations in which? Options A, the sporophyte generation alternates with the gametophyte generation. The vascular generation alternates with the non-vascular generation. Male plants alternate with female plants. Antheridia alternate with archegonia. आंसर करेंगे. Plant undergo alternation of generation in which? Question number 77. And the right answer is the sporophyte generation alternates with the gametophyte generation. Option first is correct. नेक्स्ट क्वेश्चन, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते स्क्रीनशॉट ले सकते हो. मैंने पहले भी कहा है कि आप हर एक क्वेश्चन को नोट करेंगे. क्वेश्चन नंबर 78. गैमेटेंजिया आर, क्या है गैमेटेंजिया? ऑप्शंस देखेंगे. सिंगल सेल्ड इन एल्गा, मल्टीसेलुलर इन मोस्ट प्लांट्स, multicellular in alga, single celled in most plants, responsible for the plant's ability to retain moisture in arid environment, the site of development of the fertilized egg in alga. What is Gametangia? Gametangia R. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप नोट करेंगे, स्टार मार्क लगा सकते हैं इसको भी आप. Gametangia are single celled in alga, multicellular in most plants. Option first is correct. Next, question number
79। एंड ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। विच इज अ की डिफरेंस बिटवीन अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन प्लांट्स एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन नॉन प्लांट ऑर्गेनिजम्स। ऑप्शंस है, in plants the haploid and diploid stages are both multicellular. In plants only the haploid stage is multicellular. In plants the haploid generation is always dependent on the diploid generation. In other sexually reproducing organisms the haploid and diploid generations are both multicellular. क्वेश्चन नंबर 79। क्लास के बाद मुझे कमेंट में बताएंगे कि आपने ये कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, क्या आपका स्कोर हो रहा है। चलिए, एंड अ राइट आंसर इज इन प्लांट्स द हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड स्टेजेस बोथ आर मल्टी सेलुलर। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ओके, तो सेशन आपका ये पर होता है समाप्त। मिलता है आपसे नए सेशन में। आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, ठीक है। मिलते हैं न्यू क्वेश्चंस के साथ, फ्रेश क्वेश्चन के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।